sum of these delay times is approximately one half cycle of the operating frequency. Okay, we are assuming that if the sum of these two delays, okay, delay due to avalanche process, delay due to the transit time of carriers, if both are approximately one half cycle of operating frequency, okay, either in positive or negative, one half cycle, so that gives the negative conductance. Okay, and in this again, as I earlier said, these are used for oscillation and amplification. Okay, oscillation and amplification. Now, uh, see the AC conductance is negative. Then for the AC component of carriers, the flow drift opposite to the influence of that electric field. So there is movement, opposite movement. Okay, whatever the electric field is there, there is opposite flow of carriers. Okay, opposite flow of carriers. Now, with some examples like with a DC reverse bias of the device, see the structure. Okay, DC reverse bias, then hole drift from left to right. Okay, in the direction of field. Okay, जब हम DC देंगे तो अगर हम AC दे रहे हैं, the drift process is opposite of the AC field. Okay, so in this in impact operation, the drift of holes through eye region. Okay, drift of holes through the eye region that increases with increase in AC, sorry, decrease in AC field. Okay, ये कैसे हो रहा है वो हम लोग अभी देखेंगे. Okay, when we see the working of this one. Okay, in this the effect of avalanche and drift दोनों को हम लोग हर एक लेयर में चेक करेंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कब लैग हो रहा है, कब लीड हो रहा है. Okay, कैसे वो प्रोसेस हो रहा है, बिकॉज वी विल सी इन टर्म्स ऑफ like some time period. Okay, some time period for drifting. So time dependence of growth and okay, time dependence of the growth and drift of holes during a cycle. See, in this one, if you see the top one, okay, we have n plus p region, then we have I region, then p plus, that is the terminal. Okay, so in this there is whole pulse are generated. Okay, not in the n plus p region, but it is in I region. Okay, it is in I region. Okay, so it is varying with frequency also. Okay, varying with frequency also. कब कहाँ पे हम AC दे रहे हैं, because these are the AC one. Okay, AC component. If you see the voltage cycle. Okay, now ठीक है. In this if we assume that p region, okay, not p plus, p region, if it is very narrow, okay, if it is very narrow, very thin, okay, then all the avalanche multiplication takes place in thin region near that junction only. Okay, that n plus p जिंदगी हंसी junction, हो गया है भाई. near that the avalanche process occurs. Okay, after that, okay, let us also approximate the field in the narrow P region by some constant value. Okay, some uniform value. So if DC bias is such that the critical field नेटवर्क प्लस ओप्पो for avalanche एक्शन. is just met in n plus P region, okay, n plus P region, ओप्पो है it भाई, means ओप्पो it means the avalanche multiplication that begins at t बिलियन equals to 0 from the beginning. Okay, initially. So till n plus p region, n plus p at that junction, we have avalanche multiplication of, okay, avalanche multiplication. Now the electrons which are generated due to that avalanche that move to the n plus region, okay, and holes enter the I region, okay, drift region. Okay, so holes are basically in this one, in this, the carrier holes is moving or entering to that I region.
Okay, now how these holes are reaching towards the P plus. Okay, moving towards the P plus. Okay, then we can say the process is complete. So we have some delay, okay, in generation of that hole, okay, at n plus p region. Then there is some delay in I region. Okay, यहाँ भी holes या electrons according to the structure जो भी carriers है that will move towards the terminal point. Okay, towards the terminal point. So when we give some AC voltage, okay, when we give some AC voltage and if we keep increasing, okay, it means some frequency is there. Okay, if we keep increasing, more and more holes are generated in that region. Okay, more and more holes are generated in that region. इसका Okay, फॉलोइंग कितना so है? ये क्या है बे? it means अरे indirectly we एमडी can भाई say भाई the भाई भाई सॉरी the electric field is above the हाँ avalanche अच्छा one, जहां देख से रहे कि वो हो process start हुआ है. खतरनाक बनाया है रे। Okay, so in that the carriers, whatever carriers are generated, that become कुछ तो नाम है multiplied. इसका वो हम भूल keep गया। increasing. Okay, वो जो चलो आपका ये भी कॉन्सेप्ट है ठीक है। एवलांचे ब्रेकडाउन का. So we can एग्जैक्टली। say the current due to avalanche that increase इसका exponentially नाम क्यों नहीं याद है with हमको यार? time. Okay, that increase इसमें इन्वेस्ट तो हम भी थे क्या? exponentially with time. Okay, so due to that, the whole pulses reaches its peak value. इसके नहीं। Okay, reaches its peak value. If you see the figure, okay, somewhat closer to pi by 2, but it is written not at pi by 2 when the voltage is maximum, but at pi. Okay, so it means यहाँ पे if we keep increasing the AC voltage, the multiplication process will increase. Okay, क्या चीज? and it is you can करो ना say यार। like कहाँ पे था, हाँ, the मेगा that प्रोजेक्ट। current due to that current due to avalanche process that will increase exponentially, and सब this वहीं is पे due डाल to दो the यार। multiplication process, and that will be continuous as long as the electric field is above ea. Okay, so above ये ea क्या means मतलब at है? pi value. Okay, not at pi by 2, because from मेरे को 0 to pi बताना by है 2 and pi by 2 क्या to कह pi, रहे if you see the होंगे। sine wave, okay, that is voltage. Okay, so from pi by 2 to pi also, that value is more than ea value. Okay, more than ea value. ये भी ठीक है। That is uh, electric field कितना? जहां से कि मेरा एवलांचे प्रोसेस स्टार्ट हुआ था. Okay, so it means we can say the whole pulses reach its peak value not at pi by 2 but at pi. Okay, but at pi. Okay, वही so ना। therefore there is a phase delay of pi by 2. सब Actually इसे होना था पाई पे क्योंकि थोड़ा वहां पे मेरा समय मैक्सिमम लगेगा। वोल्टेज है. Okay, but the ये हेलो maximum, बच्चे हो। okay, whole बिल्कुल pulses बिल्कुल नहीं है। reaches its peak value at pi. Okay, so there is phase delay of pi by t. मैं बाहर Okay, हूँ and that ब्रो। is due to avalanche. कार्तिक। So यहाँ पे एक डिले हुआ of pi by 2 of some value. Okay, and further delay is provided by the drift region. Okay, further delay is provided by the drift region. Okay, once the avalanche multiplication stops, the pulse of holes simply drift towards the P plus contact. Okay, drifting towards the terminal one, that is P plus. Okay, but in this duration, if you see the sine wave, that voltage, that is negative. Okay, the terminal voltage is negative. Therefore, the dynamic conductance is negative. Okay, the dynamic conductance is negative and energy is supplied to the AC field.
Okay, so now everything What depends on will that have region, that L region? region. Okay, that intrinsic region. So if the length of the drift region is chosen properly, okay, that drift region, that is I region. The pulse of hole, okay, pulse of holes is collected at P plus contact just as the voltage cycle completes. Okay, because हमें वो भी देखना है कि जो भी carriers generate हुआ due to avalanche multiplication, that should be reached towards the terminal. Okay, कब? अब जहां से कि नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन, नेक्स्ट एवलांचे प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो, उसके पहले व्हाट एवर द कैरियर्स आर जनरेटेड, दैट विल रीच टू द टर्मिनल वन. So we have to adjust the I region accordingly. Okay, so that the process of drifting will stop to the uh, cycle. Okay, it will work with the cycle, voltage cycle. Okay, now the pulse will drift through the length L of the I region, and this is very important. Okay, this formula. Okay, so the pulse will drift through the length L of the I region during the negative half cycle. Okay, during the negative half cycle, if we choose the transit time, okay, that transit time is what? That is the time taken by the carriers, okay, in I region. Okay, so the transit time to be one half the oscillation period. Okay, one half of the oscillation period. That is, okay, if you see the formula, okay, F equals to Vd by 2L. Okay, where F is the operating frequency and Vd is the drift velocity for holes. Okay, in some book you will find this as optimum frequency. Okay, so we have drift velocity for holes. L is length of I region and frequency, that is optimum frequency or operating frequency of that diode. The pulse Okay, region, therefore for the a reed length of the diode, eye region this is reed the diode function is of the name, you can say example of this impact kind diode. Okay, and this is named after the scientist. Okay, the optimum frequency is one half of the inverse transit time. Okay, one half of the inverse transit time Vd by L of holes across the drift region. Okay, so it means in choosing an appropriate resonant circuit for this device, the parameter L, because everything is depending on, not everything. Okay, the this I region, okay, again play a major role. Okay, for the finding the operating frequency. Okay, for the finding the operating frequency. Okay, so remember this formula. Okay, and this is for and the concept behind this is that the pulse of holes, whatever is collected, okay, at the P plus junction, which is coming from where? Coming from the avalanche multiplication process, from the sorry, N plus P junction. It moves towards the I region. Okay, it covers certain distance, that is certain length L, and reach to the P plus contact. Okay, और ये कब होना चाहिए? Just as the voltage cycle is completed. Okay, so हर cycle में avalanche process that will start and it will complete. Okay, so there is some optimum frequency. Okay, formula is F equals to Vd by twice of L, 2L. Okay, some examples कि Vd की value क्या है? Then I region, that length is something is given. Okay, so how to calculate that? Okay, so negative resistance or negative conductance is exhibited by an impact diode for frequencies. Okay, it means the actual property जो हम लोग अभी इसमें we are looking for negative conductance that exhibited by the impact diode for frequency somewhat above and below this optimum frequency.
Okay, for this optimum frequency, in this case, it is given 10 raised to 10 hertz. Okay, for exact 180-degree phase delay. So, a careful analysis for the small मीटिंग signal, दिखा कि नहीं the दिखा minimum frequency for negative कुछ conductance होना है varies कुछ हो गया negative conductance varies as the square root of the DC bias current for frequencies in the neighborhood that described by that same equation. Okay, so basically in this we are interested in finding the frequency. Okay, in finding the frequency and how this negative conductance is there. मनीष तो नहीं है देखा नहीं होगा अभी तक मनीष नहीं मयंक है अच्छा Process of delay due to avalanche and drift. Avalanche हो रहा है वहां पे some delay, आयुष then को transit time of k in L region, that I region of length L. Okay, so these are the two delay process, and if we change the structure, we can use holes, we can use electrons. If we change the explained here in the first slide, okay, in the first slide, see similar devices can be built in P plus N I P plus मनीष configuration in which electrons resulting from avalanches okay, so remember, okay, that's it for impact diode. After that gun diode is there. Okay, but that is not for this one. Okay, okay, so that's it. पौने घंटे में At least go through the slides. Okay, go through the slides for quiz purpose. Okay, kindly send me the attendance. Okay, send me the attendance for this class. क्विज क्विज के टाइम पे क्या मेरा प्रेजेंस जरूरी है? Should I schedule a class or a link for that during that quiz? No, sir. It's okay. Okay, it's okay na. Okay, but try to do it in time. Okay, in every quiz किन्हीं ना किन्हीं को प्रॉब्लम हो जाता है. Sir, if you remain अच्छा, online during the exam, the class is not required. okay, okay. And one more thing, I will send the link in that group, WhatsApp group itself. Is it okay? Link for quiz. हाँ बोल दूंगा मैं कोई Okay, sir. Okay, that will be open. Okay, in that team only. Okay, but I will send the link in WhatsApp. I will try to do in team also, but I will send the link in WhatsApp group. Okay, is it okay now? Yes, sir. And by Monday, uh, I will try to give the assignment for fifth module. Okay, Monday क्या तारीख हो जाएगा? 5, 6, 7. एक वीक.
Okay, I will share by Monday. Okay, 1 week is enough now. We have you can submit on 14th or 15th. Can that having marks. Okay, so careful. Okay, and not to copy it from some books directly. Okay, try to change the language. Okay, and try to draw the diagrams neatly. Okay, because that assignment having 10 marks. It may be in group. It may be in group. Okay. Okay, so that's it. You can leave. Okay, but join. Uh, quiz time क्या हो गया 5:45. Okay, 5:45 is the quiz time. Quiz of 25 minutes. Okay, 10 marks. Some numericals are also there. Okay, direct formula based. Okay, direct formula based. Okay, all the best for the quiz. Sir, do you have any idea about Sir, the pattern of LSAM? yes, sir. Pattern of insync. Pattern of insync. देखो ये वैरी करेगा, हम अभी श्योर नहीं बता सकते कुछ भी, हमको 2-3 दिन टाइम दो और मंडे या सर ट्यूसडे अभी तक तक आई तो विल। हम लोग को पता चल जाना चाहिए ना सर, अभी हाँ इतने एकदम कम पता टाइम चल बचे हैं। जाना। हाँ एकदम पता चल जाना चाहिए। बट हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट से कुछ आए क्लैरिफिकेशन। अगर हम लोग पे छोड़ दिया जाए देन वी टू कैन डिसाइड। ओके, फॉर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ओनली, फॉर दिस सब्जेक्ट वी टू कैन डिसाइड, बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शन। अगर वो नहीं आएगा बाय संडे, देन ऑन मंडे वी टू विल डिसाइड। ओके, तो हम लोग भी क्या करें बताओ, हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। देयर शुड बी सम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन कि आप एमसीक्यू दो या सब्जेक्टिव दो, बट दे हैव मेंशन थ्री डिफरेंट थिंग्स: एमसीक्यू, सब्जेक्टिव्स और असाइनमेंट्स। तो कहीं एक पे आप स्टिक रहिए। सर ओके भाई, अगर आप डिसाइड करोगे तो प्लीज ट्राई करना कि एमसीक्यू हो, क्योंकि आप बहुत, लोग या का फिर क्या ओपिनियन असाइनमेंट है? सर, असाइनमेंट दे दीजिए या हाँ, या एमसीक्यूज फिर दे। असाइनमेंट भी। असाइनमेंट ओके, और नो, एमसीक्यू। नो, नो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, नो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। नो सर। ओके, 50-50, 50 एमसीक्यू 50 दिस, वो भी नहीं। 50 दिस मीन्स असाइनमेंट। 50 नो सर नो नो नो, मीन्स आई 50 थिंक, 50 हाँ, 50 20। नो 50%, 50% एमसीक्यू, 50% सब्जेक्टिव। आप फ्री हो के अपना ओपिनियन दो, बस इट्स बिटवीन यू एंड मी। ओके, आप लोग का ओपिनियन, और क्योंकि हमें भी तो चाहिए ना आप लोग का ओपिनियन, फीडबैक कि हाँ क्या चाहिए आप लोग को। So then if you'll ask us, then we are very much comfortable in either assignment or MCQs, undoubtedly. there यस is सर। there is no there is no question of Yes, sir. subjective. सर Okay, बिकॉज अभी बहुत कम टाइम बचा है सर, कोर्स भी नहीं हुआ है, बहुत कुछ पढ़ना है। इस Yes sir, सेकंड and में अभी पता तक हम है, लोग को पॉसिबल बताया ही भी नहीं हो कुछ पा नहीं रहा गया है। है। हम सर एक एक पता दिन एटलीस्ट में है, एक एक मॉड्यूल खत्म पता है। कर रहे हैं सर, कैसे करेंगे? हम्म सर हम्म। होमवर्क इसी का सबसे ज्यादा है सर। सर एंड हम्म, असाइनमेंट के फॉर्म में डेरिवेशंस दे सकते हैं तो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो और लोड भी कम हो जाएगा हमारे ऊपर। वो तो दे रहे हैं ना मॉड्यूल 5 में सर 10 एक ही मार्क्स का। मॉड्यूल का तो हुआ है सर, एंड में जैसे पूरा हम्म, प्रॉपर एमसीक्यू होना तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा ना, क्योंकि वो एक करेक्ट या रॉन्ग वाली सिचुएशन हो जाती है और वो काफी हाई वेटेज दोनों, रहता है अब एमसीक्यू का। दोनों देखो दोनों ओपिनियन आप ही लोग दे रहे हो। सर हंड्रेड मतलब नहीं, परसेंट एमसीक्यू भी नहीं चाहिए। सर हम लोग बोल रहे हैं सर कि आधा असाइनमेंट दे दीजिए, आधा एमसीक्यूज दे दीजिए, तो तो फिर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा सही रहेगा ना, नहीं तो ऐसे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज हो जाएंगे तब भी प्रॉब्लम हो सकती है ना सर।
क्योंकि कुछ हम्म मॉड्यूल्स वीक हम्म रहेंगे तो उसमें काफी गलत हो गए हम्म एकदम, मतलब ये वही जेई हम्म वाला सीन हो जाएगा सर फिर से पूरा। समझ रहे हैं, तभी तो हम आपका ओपिनियन जान रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। हम अगर एमसीक्यू भी दे दें 100% तो भी ऑब्जेक्शन होगा। सर लेकिन आप एमसीक्यू हम्म, 100% दे सकते हैं, वो बेटर रहेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। लेकिन वो फिर यहाँ ना जस्ट करो, लाइक जस्ट लाइक यहाँ डिजिटल ना हो गया करो। ना, 0 और 1। हाँ बात। ठीक है, जो भी है, जो भी आपका ओपिनियन है, मैटर कर रहा है, ओके। हम लोग उसको ध्यान में रखेंगे, एटलीस्ट अगर डिपार्टमेंट की तरफ से बाय संडे इफ देयर इज नो इंस्ट्रक्शन देन वी टू विल डिसाइड। ओके, सब सर पेपर हम सारे लोग के सेक्शन में ख्याल से सेम होगा या अलग? फिर से बोलिए। सर सर पेपर नोटिस सारे तो सेक्शन में, सॉरी बुशब, कार्तिक कोई एक बोलो। बोलो। हाँ, सब पेपर सारे सेक्शंस में सेम होगा या अलग? सेम होगा। सर क्योंकि सीईटी में अलग हो रहा है और सर उससे डिफिकल्टी में बहुत वो आ रहा है सर। कोई मतलब ट्रिपल ई में मैम कह रही हैं शायद से असाइनमेंट लेंगी, हमारे सर एमसीक्यू लेने चाह रहे हैं, सेक्शन में मिनी प्रोजेक्ट की बात हो रही है, सब वो अलग अलग कर रहे हैं सर, नहीं उससे नहीं नहीं डिफिकल्टी नहीं होगा? नहीं, देखो ईडी, ईडी और डिजिटल दोनों में कॉमन होगा। ओके सर, थैंक ओके, यू। डिवाइसेस और डीएसटी इसमें कॉमन होगा, वेदर वो ऑब्जेक्टिव हो, वेदर सब्जेक्टिव हो, या कॉम्बिनेशन हो, या असाइनमेंट हो, जो भी हो, कि वो कॉमन होगा। ठीक है, वो हम लोग को भी इजी होगा ना। और देखो, एक और इसमें दिक्कत